أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum, everybody present in the hall and back homes. Thank you very much for joining our second last module of this 6-month course. And we are now approaching towards the end of this course, and you would be certified, inshallah, during the FAMILYCON in our diabetes workshop. Today's topic is holistic approach to prevent cardiovascular disease in diabetes. I think that over the past 6 months, we have been working a lot on this prevention aspect of cardiometabolic diseases. I have already conveyed to you that all these problems, including the cardiovascular disease, hypertension, dyslipidemia, non-alcoholic fatty liver disease, dementia, polycystic ovary disease, they are all the manifestations of some other problem. These are only the symptoms, and these all of these ailments have yet not been treated in the way they should have been. The problem is that all these problems are basically the manifestation of mitochondrial dysfunction, and no medicine on this planet Earth is able to reach mitochondria. What does reaches mitochondria is the food. So these diseases are druggable. These diseases are foodable diseases, not the druggable diseases. Although I don't deny the importance of the drugs in that whole scenario, but we must be saving our livers. As we have discussed in our previous module, we must have to save our livers and feed our guts. And there are 3 major components of this prevention. They are: control your carbohydrates, prioritize proteins, and don't fear fats. Let's see what our cardiologists are going to convey in that regard, because they are always been not a very good advocate for the fats, and very obviously so, because this trend of low fat or no fat was introduced in the early 80s by the Professor Ansel Keys. That was the big movement of no fat diet, because they were thinking that diet which comprises of fats leads to the cardiovascular disease. And incidentally, Ansel Keys was basically an economist and agriculture doctor who was appointed by Richard Nixon to take this snapshot of why these diseases are on the rise. And he took all those data from various registries, and he pretended that this is because of the high fat. And that was the day when we embarked on this no fat bus, and our diseases got worse. Our obesity got worse, our cardiovascular diseases got worse, and our hypertension and diabetes and everything. So I am utmost privileged and honored to have our 2 very eminent panelists for this evening. First, I would request Dr. Ayesha Tariq, who is the Assistant Professor of Cardiology at King Edward Medical University, Lahore, to take the seat on the stage. Thank you, madam. Our other panelist is again a very academic, very dynamic young cardiologist. I mean none other than Dr. Naresh, who is the head of the Department of Cardiology and consultant interventional cardiologist at Central Park Teaching Hospital. Our eminent speaker for this evening is the brotherly figure,
Professor Dr. Tariq Waseem, one of the big names in the treatment of internal medicine and especially the cardiology. He is the Senior Vice President of Pakistan Society of Internal Medicine, and currently he is working as a Professor of Medicine at Akhtar Said Medical College, Lahore. Please welcome Professor Tariq Waseem to talk on holistic approach to prevent cardiovascular disease and diabetes. Please welcome, sir. Thank you, Tahir, for a nice I'll be complete. It's really an opportunity to interact with world as a forerunner of our fight against disease, all diseases. And that's not because without the family physician that we can probably come up with what we aim as I said, preventing, that is preventing, whether it is treating, and then of course when it comes on to the follow-up and all that, we are the job does not get complete without updating each other's knowledge and learning from each other always is practical. I'll be keeping it very, very simple. I would not be going on to large studies or name or so many right. Yeah. Anyway. Okay. So when you talk of cardiovascular disease, and we more likely atherosclerotic cardiovascular disease, we talk of risk factors. We start from the risk factors, and the topmost risk factor remains diabetes. Right. So the topmost, the risk factor. Apart from that, there are other factors like smoking, obesity, inactivity, hypertension, dyslipidemia. These are the ones we call a conventional risk factors. And then the list of emerging factors: preterm delivery, this hypertensive disorder, pregnancy or pregnancy, hypertension. There's a lot of the factors related to women, because previously thought that women are a little bit protected, at least in reproductive age, from developing a cardiovascular disease. But these factors make them prone to develop it later on as well. And there are a few other things coming on that. And to this, we may also add depression, and a new factor they have added inadequate sleep or sleep deprivation. If you take out diabetes alone and compare it with the other risk factors causing this disease, diabetes is almost increases the risk that is like 4 times as compared to the most trumpeted one, the cholesterol. Cholesterol increases your risk of 1.1 times. The diabetes is 4.5 times almost. So this is being neglected. And so far, look at the other factors like the smoking, age, hypertension, homocysteine, and all that. So this is why we are here, that if diabetes is so much of an importance, are we doing it or managing it right to prevent it? Now, this again, we have been knowing this. We call diabetic complication classified into microvascular and then the macrovascular. Now, the microvascular one, they are actually small vessels and capillaries, with the primary problem is with the endothelium and the peribasement membrane and loss of pericyte, and they become leaky. And this leakiness leads on to proteinuria and leakiness into the retina. And the microvascular disease usually presents with nephropathy or retinopathy or neuropathy, and that is not our primary talk today. The more important is the macrovascular component. And the macrovascular component is not only just that it is accelerated atherosclerosis, which we'll be talking about, but of course, all the other problems related with the plaque rupture, thrombosis. So there are factors other than just accelerated atherosclerosis. And this, since involves the medium and larger vessels, it
affect the organs' blood supply, whether it's heart, whether it's brain, whether it's your limbs. So this is the one thing which we keep in pathogenesis, that how they different. Okay, so if I just what are the most common macrovascular complications of diabetes in the human? क्या skim, right? So I'll get among patients living with diabetes, 30% have coronary artery disease, right? And that may be in the manifest, or maybe coronary artery in the form of angina or MI. 15% have heart failure without coronary artery disease. Naresh, जो आजकल सारी बात कर रहे हैं, without coronary artery disease, right? That this is something which and that's where the newer drugs or SGLT2 and all that, they come into business. That वो भी हम बात करेंगे उसके ऊपर. 8% have stroke, and this is primarily related to the all-cause mortality or all-cause incidence of disease. But if a diabetic is 65 plus, right, 70% of them would die of heart disease, and 16% of them would die of stroke. How do they manifest? Someone already mentioned. They manifest. Right, coronary artery disease, whether manifesting as angina, acute coronary syndrome, or myocardial infarction, that is very well known. Heart failure has come as a number 2 cause of this atherosclerotic disease manifestation. PIA and ischemic stroke is number 3. Intermittent claudication already mentioned by someone, and of course, then later on to breast pain, and then it becomes critical. The critical limb ischemia, finally leading on to gangrene and amputation, and then renovascular hypertension, atherosclerotic disease, causes of secondary hypertension in middle to late age can be atherosclerosis related this renovascular hypertension, and of course, may be experiencing this every second or third person coming up with erectile dysfunction with the diabetes, and one of the major components may be atherosclerotic the disease of the venous blood supply. There are other risk factors, as was mentioned. Apart from that, persistently elevated LDL, very well known. Even persistently elevated triglycerides, particularly in diabetics, because diabetics, dyslipidemia is slightly different. They don't have high LDL. They usually have normal or near normal LDL, which is in fact otherwise abnormal because it is small dense particles. But this triglyceridemia, along with low HDL, makes them equally at risk of developing this, as it makes the LDL high level. We are talking about the inflammation coming into atherosclerosis at a highly sensitive C-reactive protein of more than 2, or lipoprotein A levels of more than 50, apoprotein B. Albuminuria will be coming onto this more and more. This albuminuria is an independent risk factor for irrespective of whether your patient is diabetic or hypertensive or not. So albuminuria of more than 30 milligram, albumin per milligram or 0.003 milligram per deciliter would be. And again, a very simple tool. We usually don't practice it, or this is ankle brachial index, the ratio of blood pressure in the arm and the ankle. Although the ankle with a normal stethoscope, it would be difficult to auscultate the posterior tibial artery from where you get it, but a simple tool can take it. And this is such an inexpensive tool of diagnosing early atherosclerosis, and it is not very routinely being used. As I would probably be recommending that to be made more familiar and made more user. When it comes into diabetics, the risk factors pertinent to diabetes which make them more prone to atherosclerosis is the one and foremost the long duration. For type 2 diabetes, it is more than 10 years of diabetes duration
diabetes makes you more at risk of. And for type 1, somehow it's slightly lesser. 20 years of type 1 diabetes would make you. So we have been telling again and again, type 1 and type 2 diabetes are two different. Type 1 diabetes is basically an autoimmune disorder and the pancreatic dysfunction. It does not involve so many of the metabolic things which Tahir mentioned, where this diabetes, type 2 diabetes is primarily a metabolic disorder. That's why the rest, all the metabolic components, whether you name it fatty liver, whether you name it hyperlipidemia and so many other things which come into play. So it takes 20 years for type 1 diabetic to develop this atherosclerotic risk, whereas it takes 10 years. Similarly, I already mentioned albuminuria of more than 30 milligram. When your EGFR, आप कल आप लैब से टेस्ट कराते हैं और आमतौर पर साथ मेंशन करते हैं से एज के साथ कैलकुलेट करके और EGFR less than 60, even if they have not manifest renal disease, they may not be manifesting edema or anything, but that makes you at risk of developing. Someone who develops retinopathy, as I said, is more of a microvascular, but it finally translates into micromedia both. They are also at risk. Neuropathy development and of course ankle brachial index of less than 0.9. So these are the things which if you routinely observe and measure, you can predict the chances of developing atherosclerosis or atherosclerotic related events into very. This we call the omnis quadrant. Char bhai. Diabetes is there, and it's a word figure. And it is not talking of obesity, mean of what mota sara abdominal obesity ki baat. 80% of diabetics world over data kata obese. 80% abdominal obesity. 70% have hypertension as well, and 60% have dyslipidemia. Now that's where our topic comes in. Holistic. We're not managing diabetes alone. You have to manage their 85% diabetic की आपको obesity भी manage करनी है, 70% की आपने hypertension भी manage करनी है, 60% का dyslipidemia भी manage करनी है. So it's not just diabetes management by hyperglycemia alone. So this is where this holistic approach comes in, and that's why we are having this lecture as the second last lecture of our presentation, that it has to be not just both. Now, having talked about, we should start with who is at risk. Everybody. I mean, whether diabetic or not diabetic, anyone coming to your, and this is a very simple tool available on your mobile. This is called as ASCVD plus risk estimator. अगर आप अपनी प्ले ग्रुप में उसमें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आईफोन के लिए, एंड्रॉइड फोन के लिए, you just download it, the app, and you just have to put in small simple figures. Can be done by everybody at home or at clinic. What you have to put in is अपने age, gender, race. इसके बाद आपने blood pressure, diastolic, systolic, cholesterol, HDL, LDL और history of diabetes, yes, no put करना है और फिर बताना है ये smoker हैं कि नहीं, hypertension की treatment तो नहीं, statin ले रहे, aspirin ले रहे कि नहीं. So put in that and it will give you a score. Now this score is very useful. If this score, this gives you this is used for patients who are not having manifest cardiovascular. This is for those उनके लिए risk estimated different होगी, तो उनके तो already disease हो बैठी. ये उनकी बात हो रही है जिनको भी disease कोई नहीं, symptom कोई नहीं, उसका आपने calculate किया. It gives you a score of के जी 10 सालों में कितने % chances हैं कि आपको कोई cardiovascular event, whether it be MI or stroke or something. And this is listed as, if it is less than 10%, you are at low risk. If it is between 10 to 10, you score after getting those data putting in. And if it is more than 20%, you are at high risk. Now, the less than 10% risk, probably कोई aggressive strategies की जरूरत नहीं. But those who are between medium to high risk, इसके अंदर हमें अपनी सारी guns तैयार करनी पड़ेगी. You have to, because 10 सालों में अगर आपको 45 साल की उम्र में 55 साल की उम्र के ऊपर 20% चांस है कि आपको हो जाएगा, और 20% is quite a big risk every fifth. Right? This means that we probably have to take it seriously.
This is where we come into the holistic approach. This, when you have defined your patient's risk, whether diabetic or not diabetic, we are primarily focusing on a diabetic patient, particularly, especially. So it all starts, the base is always over there. You can't build anything. आपकी बुनियाद अगर नहीं है तो आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, और बेस आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पेशेंट की डिजीज के बारे में समझ चुका है, एजुकेशन वो हम बार बार बात हुई होगी. So this is the base, and there are 4 pillars. Pillar number 1 is glycemic control. Pillar number 2 is blood pressure management. Pillar number 3 is lipid management. And then, of course, we have to use certain agents which have proven cardiovascular and renal benefits. Right. So these are the 4 pillars. And if you put in, you can hold this reduction in diabetes complication. And if not, of course, you will not be very, very successful. This is my favorite way of putting things. A, B, C, D, E, F of diabetes. Wherein let's very simply. This is holistic diabetes. A stands for A1C. B stands for blood pressure. C stands for cholesterol. D stands for diet. In C, you can add smoking or cigarette as well. In D is for diet. E is for exercise. And F is for follow-up. A very, very regular follow-up. Where our targets are that we want to have an HbA1c of less than 7, a blood pressure of less than 140/90, preferably less than 130/80, and if tolerated, I'm using word if tolerated, 120/70. Not for everybody. पहले हमने एक तो शुरू किया था कि 120/70 तक लेके जाना है, लेकिन एल्डरली में पॉल और पोस्टल हाइपोटेंशन सारे हैं, लेकिन अगर आपका मरीज टॉलरेट करता है, उसको बैठ के अंधेरा नहीं आता, चक्कर नहीं आते, कुछ नहीं, तो 120/70 still better, because the cardiovascular disease is as a result hypertension starts with 115/70, and every 10 millimeter increment increase it 20 millimeters by that will be double the risk. तो हमारा 120/80 भी even जो है practically from that point of view it better. कोलेस्ट्रॉल में हमारा प्राइमरी फोकस एलडीएल है, लेस देन 100, और ये हम कर रहे हैं उन लेके प्राइमरी प्रिवेंशन वाले की बात. नरेश जब बात करेगा तो वो इसको 50 पे लेके जाएगा, ठीक है, राइट? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु हैज हैड ए अटैक, तो फिर हमने उसके लिए उसका वो जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी वो खराब था, तो उसको हुआ है, तो उसको हमने उस नॉर्मल को भी नीचे लेके जाना है. आई विल बी प्रोबब्ली पैनल डिस्कशन में बात करेंगे इसके ऊपर, राइट? Minimum physical activity is 30 minutes walk daily, at least 5 days a week, or number of steps count करना है तो 6,000 is for a fitness and 10,000 is for a good. And of course, this is again very, very important, which is probably ignored by most of patients. कि जी ठीक है, शुगर चार्ज करा लिया 2 साल 3 साल, मतलब आप भी देखते हो कि कल मैंने पेशेंट देखा, पिछली दफा कब दिखाया, 2012 में, लिटरली सर मैं बिल्कुल ठीक रहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल, मेरी शुगर भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, और मैं शुगर को आप भी सुनते होंगे क्या कराए थे, A1C में करा लेते थे साल के साल, वो 7% आता था, मैं ठीक हूँ, मैं तो कोई नहीं है. बट व्हेन वी वर्कड हिम अप, he had already had a silent MI, he already had say ejection fraction of 45% or something, without any pain, without anything, but never had a fall. ठीक है, cholesterol, total cholesterol of 280 and LDL of 180. So this is, and you have to ensure to your patient at least they should be visiting their physician at least once or twice a year. कम से कम 3 महीने वैसे recommended है, लेकिन once or twice a year भी करने तो बड़ी बात है, right? So we take up this ABCD one by one. They say that if you increase your A1C by 1%, your risk of CVD event increases by 10 to 15%. 8% A1C above the level of 7 आप ले रहे हैं, this would increase your risk. अगर आप सिर्फ कोई पेशेंट फास्टिंग शुगर मॉनिटर करता है तो 1 मिलीमोल और 18 मिलीग्राम, आप इसको रफली 20 मिलीग्राम याद रख लो, तो वो आपका ब्लड 100 से ऊपर every 20 milligram increases your risk of 1%, right? The increase by 10%. Macrovascular events may require, हाँ ये भी एक है, मेरा A1C ठीक हो गया तो मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा,
even after correcting everything, it would take at least 10 years to bring it to normal. उसको जैसे कहने के एम्फेसाइज करना है कि ये नहीं है कि आज आप ठीक है अब मैं ठीक होगा जी, मैं 2 सिगरेट भी पी ला, मतलब अगला जॉब ये होता है सब कुछ ठीक है जब ये करने का, तो दिस इज अगेन दैट दिस हैज टू बी a sort of a lifelong exercise rather than just right. अब है जी के एंटी डायबिटिक हमने A1C को अचीव करना टारगेट 7% से नीचे का, तो क्या एंटी डायबिटिक में सारी की सारी एंटी डायबिटिक ये अचीव कर लेती हैं और सारे के सारे के बेनिफिट्स हैं, राइट? So when you not all antibiotics lead to improve, they may improve A1C, they may improve, but when you talk of overall cardiovascular disease and events and even free life and there may be some may have even potentially adverse effects. Potentially, I just made it very simple. तो ये शायद पसंद नहीं आएगी slide, right? The insulin has which is very good glycemic control. हम कहते हैं ये सबसे पोटेंशियल जो डायबिटिक आपका A1C कम कर सकती है वो ये है, but look at it. If you talk of the reduction in events, one reason maybe I do admit कि इंसुलिन को कभी इस पॉइंट से स्टडी किया ही नहीं गया कि ये मेस कितना कम करती है कार्ड, क्योंकि वो पॉइंट प्रूवन है और ऑलरेडी उसके जो बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए जब नई तो 2008 से पाबंदी लगी ना हमारे पे, मतलब FDA ने लगाया कि जो भी नई डायबिटीज की ड्रग आएगी वो साबित करे कि जी वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, तो इंसुलिन को इस पैरामीटर पे कभी प्रीवियसली टेस्ट ही नहीं किया, राइट? ओनली द ट्रायल वाज DCCT में भी प्राइमरी टारगेट वाज मोर ऑफ दिस glycemic control and A1C reduction and other complications. So the number 2 drug इंसुलिन को हमने कर दिया जी, शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल करती है, लेकिन अगर कहें जी कि मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट या CV डेथ, इंफार्क्शन, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर का रेट कम करती है, नो। सल्फोनिलयूरिया हमारी सबसे सेकंड पसंदीदा ड्रग, ठीक है? व्हाट डू दे लुक एट इट, न्यूट्रल, दे डू नॉट लीड, दे गिव यू अचीव ऑफ कोर्स lowering A1C, अभी हमने कहा जी 1% काउंट के बेहतर करता है, रिड्यूस काउंट है, लेकिन when you talk of other factors beyond glycemic control, हमने कहा था जी 80% को साथ ओबेसिटी है, 70% को साथ डिसलिपिडीमिया है, 60% डिसलिपिडीमिया है, तो वो वाले एस्पेक्ट भी साथ उसने देखना है। तो मेटफॉर्मिन अगेन मेस के ऊपर इसका है डाटा के मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर, बट व्हेन यू टॉक ऑफ डेथ एंड प्रिवेंशन नथिंग। पाइग्लिटाजोन बड़ी मजेदार ड्रग थी, लेकिन CV डेथ पे तो न्यूट्रल है, यहाँ जाके हार्ट फेलियर का मसला आया, तो अब जाके रोजीग्लिटाजोन तो खैर आप देख ही रहे हो कि विथड्रॉ हो गई मार्केट से। पाइग्लिटाजोन स्टिल, एंड आई जस्ट से दिस ड्रग इज नॉट बीइंग यूज्ड टू इट्स ट्रू पोटेंशियल इन आवर कंट्री। इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसका फैटी लिवर पे, इसका बहुत चीजों पे, एंड बिकॉज वो जो इनिशियल 4-5 पेपर रोजीग्लिटाजोन के हार्ट फेलियर के आए, एडीमा के आए, उस वजह से लोग इससे ऐसे मुतनफर हुए हैं, इंक्लूडिंग ऑल सिटिंग ओवर हियर, कि हम लिखते हुए डरते हैं। लेकिन सिर्फ एडीमा वॉच कर लो, हार्ट फेलियर पहले देख लो, नहीं है तो दिस इज स्टिल प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ड्रग, ओरल ड्रग की अगर बात करें। लुक एट एक्सेप्ट फॉर दिस CV डेथ ओवरऑल तो नहीं है, लेकिन व्हेन यू टॉक ऑफ दीज थिंग्स, so if you don't give it in heart failure patient and give it in another patient, it is beneficial. अब आगे जी हमारी अब एक और पसंदीदा ड्रग DPP-4 inhibitors, very good, ठीक है, but A1C control good, but when you talk of these things, probably not very effective. अब मसला है कि जो effective है, that is not affordable. I hope not affordable and injectable. So the reason, तो दुनिया भर में इस वक्त जितना भी लिटरेचर आ रहा है वो सारे का सारा GLP-1 एगोनिस्ट और उसके ऊपर आ रहा है, और उसके दुनिया जहान के फायदे, एंड ट्रूली सो एज वेल, ये नहीं कि गलत है, लेकिन बट द थिंग इज द कॉस्ट एंड थिंग इज द अवेलेबिलिटी इन इंजेक्टेबल फॉर्म। सेमाग्लिटाइड शायद ओरल फॉर्म में थोड़ी देर में आ जाएगी, बाहर तो आ गई है, तो दैट वुड बी मेकिंग आवर लाइफ इजियर। एंड देन द न्यू वंडर ड्रग ऑफ नाउअडेज, इसका सारे बेनिफिट हैं सिवाय स्ट्रोक के ऊपर, स्ट्रोक के ऊपर डाटा है नहीं, स्टडी नहीं किया गया, तो ना यू नेम इट मेस, यू मेड इट CV डेथ, so this is the state of aware of I mean this would help you in selecting the right oral or injectable
anti-diabetic patient agent for your patient. Okay. Now, summary. बाकी हमने सारा कर लिया. A1C वाले benefit बिल्कुल मिलेंगे, but when you talk of the two classes of glucuronuric agent which has demonstrated the SGLT2 inhibitors, they lead to reduction in A1C, weight, blood pressure, and their significant AST reduction events and heart failure. Heart failure हर किस्म का, चाहे वो diastolic heart failure है, चाहे वो systolic heart failure है, चाहे वो heart failure with diabetes है, चाहे वो heart failure without diabetes. Now that's why that SGLT2 inhibitors probably पिछली डिकेड की मेरा सबसे जो बेस्ट मेडिकल डिस्कवरी है उसमें से इसको कहा जा सकता है. GLP-1 receptor agonist, of course, I said they are too expensive to be even thought of being prescribed for majority of our patients. जब आप बहुत कम लोग होंगे और खासतौर पर जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसके अंदर, तो I for the right patient for the right pocket, yes, it is very good. But prescribing it and for right. दूसरा मैंने वही कहा था, मरीज तो पहला सवाल ये तो मेरी इंसुलिन छूट जाएगी, मेरा टीका छूट जाएगा, और अगर टीका साथ देते तो हमेशा रिलक्टेंट होते हैं. दैट्स माय प्रैक्टिस, और मेरा हाल आपका भी ये एक्सपीरियंस होगा. ओके, सो व्हाट डू वी डू? So you have a patient with an 80 years old who is diabetic and has more than one of the following, वो जो हमने रिस्क फैक्टर कहते हैं. ASCVD या तो रिस्क फैक्टर्स हैं, हार्ट फेलियर है, ये है, तो आपने कंकरेंटली एड्रेस करनी है चीजें, सिर्फ ग्लाइसेमिक कंट्रोल की बात नहीं है. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट वो ऑप्टिमाइज गाइडलाइन डाइट मेडिकल थेरेपी फॉर प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल करें, ब्लड प्रेशर, लिपिड, ग्लूकोज. अब आ गया जी दूसरा पोर्शन ऑफ द ग्लाइसेमिक कंट्रोल. ऑफ कोर्स वी हैव शोन दैट many drugs have a HbA1c lowering potential, but when you talk of a long-term cardiovascular risk benefit, prevention benefit, so we have to discuss and prioritize. If priority cost कर रहे हैं तो ठीक है, no additional, फिर आप जो भी यूज करें. Otherwise, we can go for a SGLT2 inhibitor selected, or you can go for GLP-1 and reassess and consider alternative if जैसे हमने कहा था कि अफोर्डेबिलिटी या वो इशू या टॉलरेंस के. So that was about A, glycemic control. Yes, glycemic control does lead to, but which agent and your selection of choice of our glycemic. That's the. Now blood pressure is again those who have 10% higher 10%. हमने कहा था शुरू कहाँ से किया था हमने, रिस्क एस्टिमेट करें उसका, और रिस्क एस्टिमेट हमने कहा 10% से कम है तो बचत है, 10 से 20 है तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, 20 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा एक्शन करें. अब अगर हाइपरटेंशन दैट इज मोर एंड इसमें तो बहुत जरूरी है कि हम फटाफट उसको 130/80 से नीचे लेके आए, ठीक है, इंक्लूडिंग इन पेशेंट विद किडनी डिजीज एंड डायबिटीज. राइट, आवर टारगेट इज 130/80. हमने कहा था कि प्रेफरेबली 130/80 एंड इफ टॉलरेटेड मे बी 127. लेकिन स्टेज 2 हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर in addition to non-coronary, we have to start blood pressure lowering medication earlier, and we have to usually start with the combo therapy or dual therapy from the very beginning. That's one thing. This is again an algorithm for that recommended treatment for confirmed hypertension. वो confirmation हम उसकी बात नहीं कर रहे जी के बाकी व्हाइट कोट और ये सारा कुछ हमने पहले अपने कंफर्म आप लेबल लगा जाइए 140/90 से ज्यादा है. If his initial blood pressure is 140/90 but less than 160, we can start with one agent. But again, if there is albuminuria, no albuminuria, you can start anything. But if your patient has albuminuria or has a documented coronary artery disease along with that, the first choice should be either ACE or ARB. Depending upon अगर ACE related to side effect है तो ARB preferred है. Look at this. और अगर ब्लड प्रेशर उसका इससे कम है तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दोनों सूत्रों में करनी है आपको. फर्स्ट सेंट्रल पॉइंट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. इफ इट इज लेस देन 160/80 वन एजेंट, एल्ब्यूमिनुरिया है तो फिर हर सूरत में ACR भी दें अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर सम अदर रीजन और अदरवाइज. बट समवन हु हैज ए 160 or 100, start 2 agents from the very beginning, and 2 agent your choice could be ACE plus CCB, non-dietary or with diuretic, or
Again, someone with no albuminuria, you can start with any of the two combination, but with albuminuria, it should always be ARB with CCB. Now you have to assess this blood pressure control, and you have to look for the adverse effects. Adverse effect, fluid retention तो नहीं है, creatinine तो नहीं बढ़ गया, potassium तो नहीं बढ़ गया. क्योंकि इन दो ARB और इनके यही तीन चीजें. जैसे calcium blocker में है fluid retention, ARB sometimes can for the first time because of the renal dynamics can lead on to renal dysfunction, and we have to watch for the potassium. तो अगर ये ठीक है तो फिर अगला स्टेप है जी उसको टाइम कितना है. The guideline in definitive hypertension says 3 से 3 महीने तक अगर टारगेट पे नहीं आया तो स्टेप अप करो. ठीक है, हमारे मरीज now so you assess the blood pressure control, treatment tolerated and target achieved, continue. Not meeting the target, add another agent from another class. If there are some side effects, of course you can switch on to then alternative, right? Now if there are again इनके भी कोई एड्रेस फैक्टर तो फिर आप लिस्ट कर देते हो और उसके बाद 3 महीने में फिर दोबारा एड्रेस करते हो. ठीक है, ट्रीटमेंट टॉलरेटेड तो आप इसको कंटिन्यू सेम थेरेपी. इफ नॉट टॉलरेटेड, दिस इज द टाइम जहाँ पे हम एक चौथा एजेंट ऐड करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. अगेन watching their potassium because mineralocorticoids, spironolactone और apelon तो एजेंट्स हैं जो ड्रग कंट्रोल रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, तो दे कैन कॉज हाइपरकलीमिया. लेकिन इन माय ओन प्रैक्टिस बहुत सारे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में जस्ट एन एडिशन ऑफ एन एपेलॉन और स्पाइरोलैक्टोन एज द बहुत मार्केडली कंट्रोल अच्छा हो जाता है. ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने बात बताया कि आपने पोटेशियम को जरूर ध्यान में रखना. देन दैट, so that is about blood pressure. The main crux is रखना कितना है, 130/80 से नीचे. शुरू क्या करना है, प्रेफरेबली अगर एल्ब्यूमिन नहीं है तो जो मर्जी शुरू कर दो. अगर माइक्रो एल्ब्यूमिन है तो फिर एज और AR भी करना है, और 150 100 है तो फिर वहीं शुरू कर देंगे. ठीक है, डायबिटिक पेशेंट कर रहे हैं. राइट. द थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल की कहानी ऊपर नीचे होती रहती है. राइट, वी आर टोल्ड कि जी कोलेस्ट्रॉल ही सबसे बुरी चीज़ है और इसको ही सबसे करना है. फिर आज इन कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी फायदे भी हैं, HDL वाले में भी हैं, दायर रस्म कराना शुरू हो गया. एंड वी हैव बीन sometime we have been over emphasizing on cholesterol, sometime we have been cholesterol अल्लाह ने बनाया तो इसको बहुत सारा आपकी सारी की सारी जो मेम्ब्रेन और ये वो लिपिड से ही बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ इसका रोल है. एंड ऑफ कोर्स राइट, बट इसमें अब ये है कि anyone with even less than 19 years of age and there is a familial hypercholesterolemia तो हम ट्रीट करना चाहिए. काफ़ी सारे हमारे पास वो जो भाटी और इसके इलाके के ग्रुप के लोग हैं उनको पता होगा, सारों को जिसका भी कराओ वो मतलब 300-250 निकलता है. तो उनमें इवन लेस देन 19 को भी आप शुरू कर सकते हैं. 20 to 39 एज ग्रुप यू हैव टू एस्टिमेट लाइफ टाइम रिस्क, और हमने कहा था 10% से ज़्यादा है तो फिर इंडिकेशन बन जाती है कि स्टैटिन देना है. राइट. For those with a family history of premature atherosclerotic cardiovascular disease and LDL of more than 160, statin should be considered. ठीक है जी, इसमें तो हर सूरत में तो ये 75 के प्लस के बाद जाके देयर इज डिबेट कि अब मजीद लोअर करने का अब कितना लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बाबा जी कितने साल और जिएंगे. एनीवे यू कैंट से, लेकिन यहाँ पे ये है कि दिस वो जो कहते हैं शेयर्ड डिसीजन, योर पेशेंट्स टॉलरेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो माइल्ड या कुछ नहीं होता तो जस्ट बेटर, बट प्रोबेबली यू कैन थिंक ऑफ not as intensive as Naresh will tell, but maybe slightly low intensity. Right. ये स्टैटिन के बारे में एक और है कि जो जिनका रिस्क लो रिस्क है 5% 7% एंड उसके साथ डिस्कशन करें. एंड अगर रिस्क इनहेंसिंग फैक्टर्स कुछ और हमने एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें CRP, लाइपोप्रोटीन और सारे फैक्टर बताए थे. अगर वो मौजूद हैं तो फिर इसमें आजकल एक नई चीज़ है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम आर्टरी स्कोर, कैल्शियम स्कोरिंग, कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग. और इसमें अगर बिटवीन 0 है स्कोर तो
5 to 10 ईयर में रिस्क कम है, लेकिन जिनका स्कोर बिटवीन 1 to 100 या एज 55 ज़्यादा या 100 से ज़्यादा है, तो इसमें भी स्टैटिन इंडिकेटेड है, राइट। नीचे वाला इफ देयर इज रिस्क, हमने कहा था मोर देन 20% रिस्क है आपका कैलकुलेटेड, जो हमने किया था। दिस इज डिस्कशन टू इनिशिएट हाई इंटेंसिटी, तो हमने कम से कम एलडीएल को 50% नॉर्मल से नीचे दे दिया। उसके लिए वो कट ऑफ वैल्यू जो है तो वो नहीं है जी कि 70 से नीचे में, उसका अगर 100 है एलडीएल और उसका रिस्क 20% है तो 150 को लेके आना है। वेदर ही हैज अंडरगॉन अ प्रोसीजर, फिर तो और भी ज्यादा एग्रेसिवली कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन समथिंग। देन वी कम ऑन टू, अगर हम ये तीन चीजें हमने कर ली, हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, हमने उसका शुगर कंट्रोल कर लिया और हमने उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल किया, इम्पैक्ट क्या है? अब ये 3 बार है, ये मैंने रात की फोटो वैसे कैमरे से उतार के इसमें सेव की थी। ये है जी ब्लड प्रेशर रिडक्शन, ये जो ये वाली लाइन है, ये है जी एलडीएल रिडक्शन ऑफ 1 मिलीमोल या 39 मिलीग्राम, और ये है जी A1C रिडक्शन ऑफ 0.9% और अपने 1%। अब आप 1% A1C रिड्यूस करते हो तो लिपोस्ट्रोक कितने इवेंट होते हैं, ठीक है, राइट, रिडक्शन, सॉरी राइट, एक ऑर्डिनरी इवेंट पे कितना फर्क पड़ता है और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर इवेंट पे कितना फर्क। नंबर 2, आप 1 मिलीमोल आपने कोलेस्ट्रॉल कम किया है तो इम्पैक्ट है दिस मच, राइट, और ब्लड प्रेशर 10/5 millimeter of mercury reduction. Look at the maximum impact is blood pressure. Maximum impact is blood pressure reduction. So don't emphasize the importance of managing hypertension in diabetes. Next, second best is of the LDL reduction. And third is A1C context में, this is the impact that each one of these, and this is what where we again come on to holistic. Now the diet, ताहिर मैंने बहुत तफसील से डाइट पे इतनी बात नहीं की, वो तुम्हारा मेरा ख्याल है माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी जो है ना उसमें किसी और वक्त में बातें हैं, क्योंकि अभी हम ओवरऑल होलिस्टिक बात करते। All adults should consume a healthy plant-based or a Mediterranean-like diet, high in vegetables, fruits, nuts, whole grains, meat, animal protein, preferably fish, ठीक है। और लेकिन वो फिश जो है जो कही जाती है वो ठंडे पानियों की फिश है, और वो वाली है जो हमारी सरदार की मछली है जिसके ऊपर 1 मन नमक और 2 मन का तेल भी साथ शामिल होता है, दैट प्रॉब्ली इज नॉट। तो आपको सारे ही मरीज कहते हैं फिश तो बड़ी अच्छी होती है, और अगर कभी वैसे टेस्ट करो तो इट्स सो साल्टी जो हमारी जो हम जो है, ठीक है, और जो टूना जिसकी बात होती है वो मेरा हाल एनीवे। So this is again regarding the dietary management, and of course the emphasis is on Mediterranean-like diet. Mediterranean-like diet जो generally जो है more of plants and vegetables and primarily either in grilled form, right, with the or with a very little oil used for cooking. तीसरा आ गया जी exercise. Of course, adults should engage in at least 150 minutes per week of a moderate intensity, जो simple walking, brisk walking है, और अगर आपको बहुत शौक है, पैसे ज़्यादा हैं, जिम जाते हैं, तो 75 minutes of vigorous activity जिसमें आप you can involve into more strenuous exercise, that is what is required. अब 2 और फैक्टर आ गए, obesity, ABCD हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। अगला स्टेप है फॉलोअप का, कि हर फॉलोअप के ऊपर आपने F जो करना है, हर फॉलोअप के ऊपर आपने क्या क्या करना है, आपने उसका वेट देखना है, आपने शुगर देखनी है, आपने A1C देखना है, फास्टिंग शुगर और A1C देना है, रैंडम लिपिड प्रोफाइल के बारे में some says every 3 months, some says अगर फर्स्ट रीडिंग नॉर्मल होता है, राइट। वेट का बड़ा बहुत ज़्यादा है, राइट, मीनिंगफुल वेट लॉस। तो जो भी उसका इनिशियल वेट है और वो डायबिटीज भी है, और हमने कहा था कि ओबेसिटी इनकी देखने में वो मेरे आसिम की तरह, मैं तो नहीं आसिम की तरह के पत्ते हैं, लेकिन यू चेक देयर एब्डोमिनल फैट ठीक ठाक है, एंड दैट्स व्हाई जब सारा जोर, और उसमें भी 5% ऑफ इनिशियल वेट, ठीक है। अगर आप कोई और गहरा लंबा चारा टारगेट ना दो, 100 है तो 95 का, और 95 से मान जाएगा, क्योंकि नहीं 80 से लेके आ तो दोबारा क्लिनिक से नहीं आना। Literally, this happens. You give them a shorter target and it is, और अगली दफा फिर और टारगेट दे दो, तो लेकिन बेनिफिट देखो,
5% of individuals associated with improvement in blood pressure, LDL-C, triglyceride, glucose, and this is delays. Agar diabetes nahi hai, तो it delays the diabetes onset. Of course, in addition to the diet and exercise, we can go some of the pharmacological therapies. यहाँ पे फिर वो GLP-1 agonist भी आ जाते हैं, यहाँ पे वो centrally acting drugs भी आ जाती हैं. And now there is more and more role of bariatric surgery in the management of morbid obesity and in management of very poorly controlled diabetic who are morbidly. लेकिन वो मेरे पास भी पेशेंट पास शेयर होते रहते हैं. थोड़ी सी बहन को कराने ले बैरियाट्रिक सर्जरी का मेरे 3-4 पेशेंट शौकिया करान शौकिया मतलब नॉट मॉर्बिड भाई अगर किसी क्राइटेरिया पे करो तो दे डोंट इम्पोर्टेंट कि उनको बैरियाट्रिक सर्जरी नहीं करा है जी के उन्हें कराई थी तो मैं भी करा सर्जन की तो ठीक है ना. दिस इज मेरी फलानी ने कराई है उसने कि मैं भी ना कराऊं बड़े मैंने उसको रोका अगले भाई मैं करा ली है right and of course so this is the obesity smoking right again मतलब of course ये जो नया फैशन आ गया ना तो जी हम वेपिंग करते हैं और वेपिंग के वो सेंटर बन गया. दिस इज इक्वली हार्मफुल. लोगों ने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहना शुरू कर दी सिगरेट चाहते हैं chewing tobacco is equally harmful. मैं सिगरेट तो नहीं पान बोड़े खाना ठीक है. This is so we have to emphasize on them that this is equally harmful. All adults should be said that every visit ये जो फॉलो में हर दफा सिगरेट पींदो कि नहीं पींदो मैं तो इतना मोटा ब्लैक पर स्मोकर लिखता हूँ उसको उसमें रबाजी रहने दो ऐना लिखो डॉक्टर साहब पहला सोच जो आया ऐना लिखो लेकिन you should and probably this is the one thing which we probably we need to work together कि जी इसमें जिस तरह भी हम उनको डिस्करेज कर सकें that is ये सबसे एक स्टडी आई थी फिजिशियन हेल्थ स्टडी फिर नर्सेज हेल्थ स्टडी और जिसके बाद ये कहा गया जी आपको कुछ है या नहीं है 40 साल से ज्यादा होगा तो एस्पिरिन लेनी शुरू कर दो सारी उम्र लेते हैं. हम सारे बड़े शुगर जस्ट इन अर्ली पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और वो था एंड एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड स्टार्टेड ऑन एस्पिरिन कि एस्पिरिन पता नहीं क्या कुछ करती है बेनिफिट बट अब आहिस्ता आहिस्ता जाके जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो फिर लगा जी कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में नॉट ऑल बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का पर्टिकुलरली इन द एल्डरली particularly those with so many other diseases so many so this has been changing over the time. So low dose aspirin might be the primary prevention of SABD in 47 years who are not at risk of bleeding. लेकिन अगर आपका पेशेंट वो GI ब्लीड का रिस्क है महीना की हिस्ट्री है GI इंटॉलरेंस है तो ये लाइन मजार है. लो डोज शुड नॉट बी ऑन रूटीन बेसिस फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन. ये जो पहले था ना जी बहुत सारे बाबा जी हमारे अभी भी हैं तो एस्पिरिन तो मैंने डॉक्टर की सारी उम्र लेनी है नहीं छड़ी हेमोग्लोबिन 5 एस्पिरिन नहीं छड़ी. दिस इज अगेन सो और 70 से ऊपर देनी नहीं है ये एक और लाइन ठीक है प्राइमरी प्रिवेंशन की बात है. लो डोज शुड नॉट बी एडमिटेड फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन अमंग एडल्ट एज who are increased. तो जिनका रिस्क है उनको बिल्कुल नहीं 70 के बाद कोई जरूरत नहीं है. रेस और के सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए भी है कि नहीं है लेकिन ये जो यूके प्रिवेंटिव टास्क फोर्स जो है those who do not have a history of CVD and are not already taking aspirin is Imran Khan. Not recommended, absolutely not. जिनको कोई रिस्क नहीं है कुछ नहीं है CVD नहीं है so daily is not recommended at all. For those 40 to 59, aspirin could be considered provided your risk is 10% or more. Right? वो हमने शुरू में रिस्क कैलकुलेशन शुरू किया था. Should stop in those 75 above. उसमें you should consider particularly if they are low hemoglobin. Okay. So back to the holistic approach. The holistic approach is, again, I repeat the same very thing. You have to maintain an A1C of less than 7. You have to maintain blood pressure in this range, cholesterol less than 10, low carb, low fat, high protein, 30-minute daily walk, follow up every 6 months, maintain, reduce weight, quit smoking. That's all from my side. Thank you very much.
पेपर की आप बता दीजिए, मैं मेरा ख्याल है। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग या लेवल के साथ, हाँ रोजुवास्टैटिन या उनके साथ, मतलब देयर आर सम medication, some antihypertensive medication which are supposedly, I mean, they're said to be they can worsen the hyperglycemia or some new onset diabetes जिनके साथ मतलब हो सकती है। लेकिन जो हमने तीन मतलब टेस्ट इन्वर्टर में एक ग्रुप के साथ था, लेकिन जनरली ARB और वेल्सार्टन और ये सारे जितना भी डाटा है, they reduce the risk of new onset diabetes। स्टैटिन रजुवा के साथ थोड़ा सा था, लेकिन नॉट टू एन एक्सटेंट इन द लॉन्ग रन दे प्रेजेंट डायबिटिस। सर अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू। फर्स्ट पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड आई थिंक पर्सनली दैट डॉक्टर तारिक वसीम is one of the presenters who sticks to his task so elegantly कि जो उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसको आज आपके सामने उन्होंने हाईलाइट किया है। और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपने टॉपिक का एक हक अदा किया है। होलिस्टिक अप्रोच, इससे ज्यादा बेहतर पढ़ाई नहीं जा सकती। तो थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरा ये था कि वी हैव सीन नंबर ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम इंटरनेशनल गाइडलाइंस, यू नो। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस आर यूजुअली, you know, they are made up by the international organizations who are the main stakeholder for our health and everything, and including American Heart Association, American Diabetes Association, ADA, whatsoever and all. Acha. With due apology and regard, and you have all the rights to differ from that contradiction. I personally think that these guidelines are formulated to sell more and more medications, because all of these guidelines are being funded by the international pharmaceutical organizations. तो अगर हम इन पे ही स्टिक करेंगे तो मामला थोड़े से, मतलब मेरी नाकस राय में, being a humble student of endocrinology and metabolic disease, अल्लाह मियां ने जब इंसान को पैदा किया था ना, तो उन्होंने फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करें। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इसको सजदा नहीं करता। फरिश्तों ने कहा, और शैतान सबसे आगे था, तो उन्होंने कहा जी कि हम आपकी इबादत कर रहे हैं, तो इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है। तो अल्लाह मियां ने कहा कि मैं इसको अपने नाइब के तौर पे खलीफा बना के दुनिया में भेजना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि तुम्हारा रोल भी बरकरार रखूंगा, एक बाएं कांधे पर एक दाएं कांधे पर बैठा रहेगा, और उनकी नेकियां और वो सारा कुछ एक नेकियों का और एक बुराई का फरिश्ता होगा। अब इस सारे सिनेरियो को हमारे एक मरहूम अजीज मियां कवाल थे, ठीक है, लोगों का ये ख्याल है तो सिर्फ कवाल थे। मेरे ख्याल में ही वाज अ बिग इंटेलेक्चुअल। उसकी अपनी शायरी इतनी जबरदस्त है कि उसने सारे सिनेरियो, मैं बताऊंगा रेलेवेंस क्या है। तो मैं बताऊंगा कि आज की टॉक से रेलेवेंस क्या है। तो सारे सिनेरियो को अजीज मियां ने ये कहा कि जिस दिन मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा ना, तो मैं अल्लाह मियां को इन अल्फाज के साथ जो है ना अपना दुखड़ा सुनाऊंगा कि गोनामा या माल मेरा हरफ स्याह है। मुझे अचानक ये शेर याद आ गया, गोनामा या माल मेरा हरफ स्याह है, लेकिन मेरे महबूब ये तो फरिश्ते ने लिखा है। तू दाना ओ बीना, तुझे हर शय का पता है, ये रोजे अजल मुझसे खिलाफत पे खफा है। इसकी तहरीर पे दोज़ख की इजाजत कैसी, बख्श दे वरना मैं कह दूंगा कि खिलाफत कैसी। ठीक है जी। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तहरीर पे चलते हुए इलाज करेंगे तो थोड़े से मामला डिफरेंट हो जाते हैं। बट नाउ इट्स ओवर टू आवर पैनलिस्ट टू हैव देयर व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू चलिए नरेश साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। अपना ओवरव्यू दे दीजिएगा, उसके बाद द हाउस वुड बी ओपन फॉर द डिस्कशन। Thank you so much. First of all, I'd like to thank all of you present. And one of my favorite I'd love to listen and learn a lot when it talks. दो तीन चीजें हैं, थोड़ी सी बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट हमारे टर्नल विजन जरूर है, लेकिन डाइट की बात हुई थी। सर ने कहा था कि लिपिड के हम खिलाफ हैं। हाँ हम हम हैं। उसकी वजह ये है कि सर मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया को जो कुछ पहुंचा रहे हैं, हाँ,
नहीं, मेरी तो- थ्योरी नहीं है भाई हाँ। दी। अच्छा, मान लिया आप माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें ये पता है कि फर्स्ट क्रॉप से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरीज आपको देता है, 1 ग्राम लिपिड 9 किलो कैलोरीज, और अल्कोहल हम मानते नहीं लेकिन हमारे यहाँ पिया जाता है 7 किलो कैलोरीज। सर आप जितना लोड माइटोकॉन्ड्रिया पे ऊपर वो बाकी स्टोर करेगा, आपकी जरूरत ले लेगा, बाकी स्टोर करेगा। हम कहते हैं आप लिपिड, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन खर्च भी तो करें, कसरत करें। ये उनके लिए है जो कसरत करते हैं। हमने से कितने इंक्लूडिंग मी जो कसरत करते हैं, हम कहाँ वॉक। लोग कहते हैं जनाब मेरा दादा तो देसी घी खाता है गाँव में, मैं खाता हूँ तो मुझे एमआई हो गया 35 साल की उम्र में, दादा मेरा 85 साल तक ठीक है। भाई दादा आपका काम कर रहा है, आप जला नहीं, आप कसरत करें, आप खाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो स्टडीज पब्लिश हुई है, पाकिस्तान 2nd नंबर पे आता है सैचुरेटेड फैट। हम ये कहते हैं हम लिपिड के खिलाफ नहीं, हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, उसकी भी टाइप। अब वो हम हाइड्रोजनेशन मैट्रिक में पढ़ते थे घी बनाने का तरीका, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के हम खिलाफ हैं। आप बनास्पति घी और देसी घी ना खाएं। एक ने सर ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था पीसी में मेरी टॉक की, सर चाहे देसी घी भी हो आपकी रगों में जमेगा, आपको कसरत करके उसको जलाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि बहुत सारे लोगों में कॉर्नरीज नॉर्मल होती है। डॉक्टर साहब मेरी एंजियोग्राफी हुई, मैं नॉर्मल हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन मेरा दिल का फंक्शन 25% क्यों है? अब ये स्टडीज हैं कि बाकायदा डायबिटीज इटसेल्फ कार्डियोमायोपैथी काज करती है, मसल्स को भी। ये जरूरी नहीं दिल की नहीं, जरूरी कि कॉर्नरीज भी खराब हो, मसल इटसेल्फ भी खराब। ट्राइग्लिसराइड्स की बात हुई, नेचुरली हमारी पॉपुलेशन में एलडीएल की निस्बत ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। फ्यू डेज बैक a patient came to me, just 32 year old, सर आप मानेंगे 6000 रुपए ट्राइग्लिसराइड। मुझे एकदम नर्स ने बुला लिया, सर ये तो फर्स्ट आ रही है इनकी बिल। वो फर्स्ट नहीं थी, वो ट्राइग्लिसराइड। तो हमारी पॉपुलेशन में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ये बात हकीकत है। सबने मेंशन किया हाउ टू ट्रीट दैट ट्राइग्लिसराइड, आपने कैसे ट्रीट करने हैं, लिपिड के कैसे, एक्सरसाइज का कैसे, हाउ टू ट्रीट। नंबर 3, फिर एबीआई की बात हुई, एंकल ब्रेकिंग। सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, व्हेन वी वर स्टूडेंट हमें ये सिखाया जाता था पीटी ऑपरेटर्स का, दोनों लिम्ब में चेक करने, दोनों पैरों में चेक या आपने करना है। हम लिम्स बचा सकते हैं, हम टांगे बचा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट की ट्रीटमेंट से, अगर सिर्फ पीटी ऑपरेटर्स टेक्निक को यूज करना सीखते हैं। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं वर्कशॉप करवाता था, सबको याद होगा, हम डायबिटीज वालों के साथ काम करते थे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज पे। मैं हर एक को कहता हूँ अगर आप ये टेक्निक सिखा, सिर्फ लोअर लिम्ब में बीपी कैसे चेक करना है पल्पेटरी मेथड से और अपर लिम्ब, आप लिम्ब बचा सकते हैं, किसी को काम करने से बचा सकते हैं, इतना आसान है। रेशो ही निकालनी है अपर लिम्ब की। फिर बात आई हमारे पास एंटी डायबिटिक जितने भी ड्रग्स, सर ये हकीकत है एंटी डायबिटिक ड्रग्स के हम काफी खुश भी हुए थे कि जितनी भी एंटी डायबिटिक ड्रग होंगी जब तक उनकी कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी नहीं होगी वो मार्केट में नहीं है। बहुत सारी एंटी डायबिटिक ड्रग्स थी, जैसे साहब ने बताया कि शुगर तो बहुत अच्छी कंट्रोल करती है लेकिन लोग मर, बहुत ऐसी हैं जिनमें हार्ट फेलियर हो रहा था। अच्छा सवाल ये है कि क्या वजह है कि शुगर कंट्रोल है फिर भी लोगों में डेथ ज्यादा है? देखा यह गया कि सिर्फ जितनी भी एंटी डायबिटिक इंक्लूडिंग इंसुलिन और वो दवाइयाँ जो इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं वजन बढ़ती है, जो दवाई भी वजन बढ़ती है वो कार्डियक डिजीजेस काज करेगी। यही वजह है कि अब जो भी एंटी डायबिटिक आ रही है, सर मुझसे बात करेंगे, अब वो उनका ध्यान वजन पे और कार्डियोवास्कुलर। यही वजह है कि GLP-1 है, यही वजह है SGLT2 है। जब तक इनकी कार्डियक सेफ्टी नहीं होगी ये मार्केट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बचाना ही मरीजों को। शुगर कंट्रोल करना सिर्फ मकसद नहीं है, जिंदगी बचाना मकसद। फिर बात हुई सर कोलेस्ट्रॉल की। यूरोपियन डेटा ये सजेस्ट करता है, हमारे यहाँ जितने भी कैंप्स लगते हैं वो कहते हैं 200 से ज्यादा जिसका LDL ज्यादा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन की जो स्टडीज पब्लिश हुई है जिसका 150 से ज्यादा उनमें MI हो रहा था। सर की बात से मैं मतलब इंटरनेशनल डेटा उनका, हमारा जो डेटा अभी जो रिसर्च हो रही है हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। इंडो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, इंडो पाकिस्तानी पॉपुलेशन और इवन तामिल ये बात देखी गई कि जिनका 150 से टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, MI ज्यादा है, इसलिए रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन।
75 ऊपर से बात हुई कि 75 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र, क्या उनको स्टेटिन देनी चाहिए? अगर सर वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है तो मास स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि कोई मेमोरी लॉस नहीं। अभी तक की जो स्टडीज हैं जो पब्लिश हुई हैं, इवन जिसका एलडीएल 25 मिलीग्राम से कम भी किया गया उनमें कोई इफेक्ट नहीं है। लास्ट टाइम आई वाज इन जॉर्डन, वहाँ पे एंडोक्राइन बोर्ड की एक चेयरमैन थी, उन्होंने सवाल उठाया कि जो आप 50 से कम लाते हैं ये तो आप पेशेंट को मार देंगे, इनमें तो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, मेल में इनफर्टिलिटी आ जाएगी, मेमोरी लॉस होगा। तो मैंने उनको कहा कि अभी तक की स्टडीज में 25 तक कुछ नहीं है, हम फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट 50 करें। जो हमारी रिकमेंडेशन है कार्डियोलॉजी की जितनी एज की और बाकी रिकमेंडेशन है, इसका लेस देन 40 हो जाए, लेस देन 50 हमारा टारगेट है हाई रिस्क। एस्प्रिन की बात हुई, यस सर, एस्प्रिन पहले ये कहा जाता था हम भी स्टूडेंट थे जिसकी 40 साल से ज़्यादा उम्र होती है, फिर हुआ कि जो डायबिटिक 40 साल से ज़्यादा हो सबको दे। असेंट ट्रायल आया था, उसने बताया कि जिसमें सिर्फ डायबिटीज और कोई रिस्क फैक्टर नहीं, उनमें 28% लोगों में इसमें ली। इसलिए अभी हम कहते हैं एक या एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर को डायबिटीज तो एस्प्रिन चाहिए, अदरवाइज ना है। आई एग्री आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर 75 ईयर से उम्र ज़्यादा है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हमें नहीं देनी चाहिए। 75 साल से ज़्यादा है। मैं और आप कौन होते हैं डिसाइड करेंगे? मेरे पास एक जज साहब आए, रिटायर्ड जज है, उन्होंने कहा बेटा मुझे एंजाइना है, मेरी सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में एक वेसल आ गई, अब मुझे कोई स्टंट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है। वो कहते मैं जीने का हक नहीं है क्या? जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है मैं जीना चाहता हूँ। तो हमें ये अच्छा बट बीइंग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट सर मैं तो मना नहीं कर सकता, बट ये ऑब्जर्वेशन जर्नल में क्या कहते हैं? These are the observations from our point of view. Naturally, endocrine में और हमारी कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस जरूर हैं। ये लास्ट टाइम भी एक टॉक हुई थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसी हॉल में पिछले हफ्ते एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आए थे, वो कुछ और बता के गए आपके पास। सर उसकी वजह सर की बात से मतलब हमारी अपनी कोई स्टडी, उसकी वजह ये है कि हम अभी तक किसी चीज़ को फॉलो करें। मेरी मजबूरी है कि मैं कार्डियोलॉजी को गाइडलाइन को फॉलो करता हूँ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मजबूरी है जब तक हमारी अपनी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मेरे प्रोफेसर who we were with him since my undergraduate level is sitting next to me and he has delivered the talk very apprehensively, and I feel proud being sitting next to him. Being a cardiologist, we always emphasize on certain things. Holistic approach is one of those things. Every disease has got its colleagues, friends. For example, hypertension, diabetes go hand to hand, right? So हमने कभी भी ये चीज़ नहीं पढ़ी कि अकेली डिजीज को ठीक करना है। होलिस्टिक अप्रोच पे हम आजकल इसलिए एम्फसाइज करते हैं कि इट हैज़ गॉट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइको सोशल इम्पैक्ट। सिर्फ डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हेड टू टू हम पेशेंट को देख रहे होते हैं, उसकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उस डिजीज के इम्पैक्ट उनको भी जा रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। खाली एक डिजीज ट्रीट करना, जी डायबिटीज है जी आप ये ना दें, ACRBs ना दें, आप CKD की प्रिवेंशन ना करें, आप स्ट्रोक की प्रिवेंशन ना करें, आप MI की प्रिवेंशन ना करें, यू हैव टू डू इट। जहाँ एक डिजीज एस्टैब्लिश होगी, एक इवेंट हो गया, वो तो डिजीज एस्टैब्लिश हो गई, हम भी प्रिवेंशन की तरफ जाना है, विच इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑन आर बिहाफ। इसमें पेशेंट नहीं आपको बताता, आपने एजुकेट करना होता पेशेंट को। अवेयरनेस मैस लेवल्स पे हमारे यहाँ है नहीं, बिकॉज हम लोग इस तरह के सेमिनार्स पे डिलीवर नहीं कर पाते। जो भी मैसेज है, हमारा टारगेट कभी भी मैसेज नहीं हुआ। हमारे पास जो हॉस्पिटल्स में पॉपुलेशन आती है दैट कम्स विद एस्टैब्लिश्ड डिजीज। हमने तो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कभी काम ही नहीं किया। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे कितना तो काम हुआ हमारे यहाँ। It has started with NICPT, they have started it, और बहुत अच्छे मैसेज को टारगेट कर रहे हैं, बट स्टिल इन पंजाब वी आर लैकिंग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। जब तक हम इस होलिस्टिक अप्रोच को लेके नहीं चलेंगे, वी वोंट बी एबल टू
achieve our targets. ठीक है, बाकी जो फेमिनिकन स्कोर है, इट शुड बी अप्लाइड. हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, डाउनलोड करने में कोई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते. आपने एज, जेंडर, एथनिसिटी, उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डालने, यू कम विद द स्कोर. ठीक है, यू नो इट कि इसको मैंने ट्रीट करना है और इसको मैंने अभी डिलेड ट्रीटमेंट देनी है. वंस द डिजीज इज एस्टैब्लिश्ड, उसमें तो फिर कोई बैक ऑफ नहीं. You have to go with antiplatelets, you have to go for lipid lowering drugs, you have to treat diabetes, and you have to go for prevention of stroke, MI and CKD. ठीक है, ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी. Dealing with the calcium scoring in cholesterol, it is on CT coronary angiography. We take out the calculate the score 0, 1, 200 and above 100, 200, and it has got up to 500, which is very, very high risk for. It is just a score that tells you calcium being deposited within the atherosclerotic plaque in the coronaries. And this plaque may become unstable at any time and may lead to MI. And it may cause, if it is highly unstable plaque, it may cause angina or angina-like equivalent angina-like symptoms like fatigability, early dizziness, syncope, pre-syncope, so shortness of breath. So it is very important, if the patient does not have any other risk factor except for one disease, you should not ignore even the subtle symptom which he is telling you. This is our practice. We totally ignore. हाँ, story सुना रहे, ठीक है, come back to the track, come back to the track. नहीं, उसकी सुने. अगर उसको intermittent claudication होती है, despite he is not smoker, उसको सुने. कितने steps के बाद, कितने blocks of ग्राउंड लेवल पे कितने ब्लॉक्स वो चल पाता है, फिर उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, या कितनी अर्ली फिटिगेबिलिटी होती है. These signs or symptoms should not be neglected in a diabetic patient, I personally believe. Then coming on to diet, we endorse Mediterranean diet a lot, including legumes, nuts, green leafy vegetables and nuts. It's always handful of nuts. वो जो अब सर्दी का सीजन आ रहा है ना, तो सब ने मूंगफली बैठे रहना है, बातें करती रहे, 2-2 घंटे मूंगफली चली जा रही है. This should not happen. One handful of nuts is enough. Not canful. Not canful. Not up to this tighty level, right? And talking about exercise, गोरे हमारी तरह पागल नहीं है. उन्होंने हर चीज गाइडलाइंस बनाई है, किसी मकसद के तहत बनाई है. ACC AHA recommend करता है अगर पर 150 minutes walk per week, तो इट मीन्स 3 to 5 days पर वीक. ठीक है, वो वीकेंड अपना एंजॉय करते हैं. वो कहते हैं अगर मैंने 5 दिन काम किया तो 2 दिन मुझे अपने आप को भी तो रिलैक्स रखना है ना. 5 दिन तो हम कुछ कर सकते हैं, 5 दिन तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाकी वीकेंड एंजॉय करें, स्पेयर करें. वो ब्रेक्स में काम करते हैं. देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट इन गाइडलाइंस. इफ यू sit over and think about it, you will come to know कि उन्होंने ऐसे बेमकसद नहीं. हाँ, टोटली एग्री, कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80% लॉजिकल बात होती है. ठीक है. वैसे सबसे थोड़ा सा डिसएग्री भी कर रही हूँ और एग्री भी कर रही हूँ. You have all the right. बाकी जो है, आई टोटली एग्री, लॉस टू फॉलोअप्स बहुत ज्यादा होती है. जिस तरह सर ने कहा कि पहले भी पेशेंट्स आते हैं, कोई 10 साल के बाद आ जाता है, कोई 2 साल के बाद. हम लोगों का लॉस टू फॉलोअप का ये है कि अगर पेशेंट आते हैं ना, अगर उसको एम्फेसिस जरूर दें कि आपने वीकली बेसिस पे आफ्टर MI, आफ्टर डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप उसको जिस तरह वीकली, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली या ट्वाइस अ ईयर एम्फसाइज जरूर करें. लिख के अगली डेट दें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे डू कंप्लेन कि हमें भूल जाती हैं चीजें, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी नहीं होती. तो आई टोटली एग्री विद दिस कि उनको लिख के दें ताकि उनको भी मेमोराइज हैं चीजें, और कभी वो दे गो थ्रू योर प्रिस्क्रिप्शंस तो उनको याद हो कि डॉक्टर साहब ने डेट लिखी थी. रेस्ट, आई थिंक इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, बड़ी मजे की बात यहाँ पे हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो जो 6 माह हमने मेहनत की थी ना, आज वाकई उसका ना समर नजर आ रहा है. नरेश का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. नरेश को पता ही नहीं चला कि बातों बातों में उन्होंने लो फैट डाइट को एडवोकेट कर दिया. अब वो कैसे किया है मैं आपको भी बताता हूँ. अच्छा, पहली बात तो नरेश ने की कि जी हमारे जो दादा परदादा थे
वो सारा कुछ खाते थे तो फैट को जला लेते थे। तो पहली बात सर ये है कि जो हम हमारी डाइटरी फैट जो हम खाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम फैट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रोसेस फूड के अंदर, प्रॉब्लम थी सीड ऑयल के अंदर। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो चाहे खेतों में ना भी घूमते, वो देसी घी और प्रॉपर वो खाते थे। और दूसरी बात ये है कि जितना भी हम फैट डाइटरी इनटेक करते हैं, इट गोज इनटू द गट, then it is packaged into chylomicrons, which goes to the lymphatics, and it doesn't, a very small portion of that goes to the liver. The fat which goes to the liver is detrimental for the health, and that is the fat which is made in the liver by the process called de novo lipogenesis. And this is the main culprit behind is the fructose, which is the part and parcel of every disease, and which is the part and parcel of every staple food nowadays. If we take LDL cholesterol to the cardiovascular risk, the hazardous ratio is for LDL to cardiovascular disease 1:3, which means if one person has a high LDL cholesterol, the risk of cardiovascular disease is 30%. But if a person has high triglyceride level, the hazardous ratio is 1:8, which means if you have high triglyceride levels, the risk of cardiovascular disease is 80%. So which is most important? Triglycerides. Now, where do these triglycerides come from? They come from your processed food. They come from the fructose, which goes into the liver, and it is not stored in the form of glycogen anywhere. It is converted wholeheartedly into the fat by the process called de novo lipogenesis. And when the liver is overwhelmed, it gets rid of this fat in the form of triglycerides and VLDL, very low density lipoproteins. It sheds off. So where does this triglyceride came from? Fructose. Where does it came from? Processed food. So the need of the hour is to get rid of this processed food, seed oils, and all that, not the fat. Thank you very much. Next. दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि ये जो SCLT आपने कहा उसमें सारे रिस्क फैक्टर कवर होते हैं, तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो UTI इन्फेक्शन आ जाती हैं, तो उनका हमें प्रोफाइलैक्टिक कुछ करना होगा। जनरली मतलब हम अभी भी बार बात कर रहे हैं कि हमारे अपने यूज करते 4-5 साल हो गए हैं, तो this documented in West is quite high, where we don't find as frequently as to some extent in some women they do complain of, और उसमें भी मतलब तो बहुत सीरियस नेचर की UTI या वहाँ पे इवन वो कॉर्नियल गैंग्रीन और ये वाली चीजें भी रिपोर्ट हुई हैं, तो we have not found it very commonly. बाकी prophylactically कहा जाता है कि first is more of a hygiene that you probably और एक रीजन ये भी दिया जाए कि हम लोग at least ये वाली hygiene हमारे part of the world में ज़्यादा using water for ablution and not using tissue paper and all that, that is the contamination का risk आ जाता है. So that's something. Prophylactically there are different, कुछ लोगों ने prophylactic once a month or once a week लोन का भी इस्तेमाल करके देखा है, that has been recommended in recurrent UTI वालों में. लेकिन generally if it's a more serious problem, then of course you probably have to look into the alternate treatment. जैसे एंटीबायोटिक तक पहुंचने से पहले एक तो हाइजीन की बात हो गई, वाटर यूजेज की बात हो गई, अगर हम उसके साथ जो है वो सिट्राल का या कैनबेरी या ये चीजें देना चाहिए। Alkalinizer depend करता है कि what organism and whether the alkalinization medium मतलब changing the medium to alkaline would inhibit their growth or not. Excuse me, mostly वो फंगल इन्फेक्शन रिपोर्ट की गई है ना, उसमें दोनों कैंडिडियासिस यूजुअली कहा गया उसमें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, लेकिन personally I'm not aware of that regular use of cranberry or ये would be of benefit if someone. Not recommendations about the use of cranberry and citralca and alkalinization and about the जिनमें रिस्क है, जैसे अगर कोई पैम्पर्स यूज कर रहे हैं पेशेंट का, रिकरेंट UTI है, बैक बाउंड है, उनमें आपकी क्योंकि देखिए हम मीडियम प्रोवाइड,
हम एक्सक्रीट कर रहे हैं ग्लूकोज को, वहाँ ब्लैडर में उस पे, तब वो मीडियम कर रहे हैं। These are risk factors, it's your clinical assessment about that specific patient. जैसे सर ने कहा हमारे यहाँ ये एक्सपीरियंस कम हुआ, इंटरेस्टिंगली ये सच है। हमारे बहुत सारे पेशेंट जो बेटर थे, जो पैम्पर यूज कर रहे थे, हाइजीनिक था उसमें, अदरवाइज ये इंसिडेंस हमारे यहाँ कम, उसकी शायद एक वजह लास्ट में डिस्कशन की डॉक्टर ने बड़ा सा पॉइंट किया, उसकी वजह ये वजू करने का तरीका है, वो शायद हाइजीन से आपको बचा, हाइजीनिक तरीका वो बचा लेते हैं। वहाँ शायद इसलिए ज़्यादा हुआ तो वहाँ टिश्यू पेपर का बोल, बट नॉट रिकमेंडेड। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा स्मोकिंग और ई स्मोकिंग बराबर है, ये कैसे सर? कैसे सर? ई स्मोकिंग मतलब निकोटीन कंटेंट स्टिल उसमें भी उतना ही है जो एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम दी, बिकॉज एक आप इनहेल मे बी लंग रिलेटेड डिजीजेस जो है जो डायरेक्टली मतलब निकोटीन रहते हैं वो शायद रिस्क कम हो, लेकिन व्हेन इट कम्स ऑन टू दी मेटाबॉलिक कंपोनेंट एंड उसमें ऑलमोस्ट इक्वल रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस, तो उसमें निकोटीन कंटेंट बल्कि इनफैक्ट जो अल्टरनेटली हम निकोटीन पैच के जरिए सारा कुछ यूज करते हैं उसमें देखिए एक सिगरेट में जो अब तक की स्टडीज हैं मोर देन 1500 सब्सटेंसेस होते हैं जो हम, अब हम ये कहते हैं कि अच्छा हम तो सिर्फ वैप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ निकोटीन आ जाए। सर निकोटीन बाय इटसेल्फ इज अ टेक्निक जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, आप ये तो कह सकते हैं तो उनके लंग्स पे बाकी इफेक्ट कम कर रहे थे, लेकिन टार का वो इफेक्ट कम हो जाएगा, पेपर का मतलब कुछ चीजें जो पेपर से हैं, कुछ टार है कुछ है, लेकिन रेस्ट ऑफ थिंग दैट रिमेन्स। आप चाहे निकोटीन तंबाकू सूंघे नस्वार की फॉर्म में, चबाए नस्वार की फॉर्म में, या उसे सुलगाएं कुत्ते की फॉर्म में, या सूंघे सब तो करें। सर इसका अगर आप इजाजत दें तो आपकी इजाजत से बड़ा आसान, क्योंकि मैंने तो हर चीज कार्डियो मेटाबॉलिज्म से रिलेट करनी है, मेरी प्रॉब्लम ये है हम लोग सुप्रॉल यूज करते हैं, स्प्लेंडा या स्टीविया यूज करते हैं, ठीक है ना जी। होता क्या है कि क्या आप ये समझते हैं कि ये रूटीन में यूज करनी चाहिए? रीजन बीइंग कि जब आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हैं तो उसके साथ ये होता है कि ब्रेन को मैसेज यही जाएगा कि बॉडी के अंदर कार्ब्स आ रहे हैं, ठीक है जी, और वो उसके अगेंस्ट इंसुलिन रिलीज कर देगा। जब इंसुलिन रिलीज हुई, हमारी शुगर नहीं बढ़ी, तो हमने ये समझ लिया कि ये जो स्वीटनर्स हैं ये बड़ा अच्छा कंट्रोल करते हैं। सेम इज द केस ओवर हियर, जब आप उसको ई सिगरेट यूज करते हैं, ब्रेन को मैसेज सेम जाएगा और वो तमाम डेट्रीमेंटल हार्मोन्स और वो जो तमाम आपके अंदर कार्डियो मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं, दे वुड बी ऑन द सेम लेवल because brain is prone to the nicotine stimulation for last 20-30 years. Now when you replace it with some artificial thing, the brain still gets the same message in the same way as sucralose is. Remain intact. Any other question now? Please. क्योंकि आपने कहा कि शामिल पीपल में भी ट्राइग्लिसराइड काफी ज्यादा होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? दूसरे आपने फरमाया कि 5% अगर हम रिडक्शन करते हैं तो इसका टारगेट अगर हम पेशेंट को किस तरह से देखेंगे, कितने अरसे में इसे रिड्यूस करना है और वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम 3 महीने में 4 महीने कैसे कैलकुलेट? देखिए एक ये बाकायदा स्टडीज हुई, क्या वजह हुई, ये मैं अक्सर अपनी स्टडीज में कहता हूँ कि हम सुना करते थे दिल की बीमारियां सिर्फ अमीरों की हैं, गरीबों की नहीं। आज से 20-30 साल पहले तो यही था। क्या ऐसा हुआ कि हम गरीबों में आने लगे? यस, हमारा लाइफस्टाइल, तर्ज जिंदगी चेंज, हमने पैदल प्रोसेस फूड जो है गरीबों की भी दस्तरस में आ गया, हर बच्चा बर्गर खा रहा है, बोतल पी रहा है, स्टिंग पी रहा है। तो सर वजह ये हुई कि हमने फुटपाथ खत्म किए। ये बागों का शहर है लाहौर, बागों की जगह आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, हमने साइकिल खत्म कर दी, पीको और यहाँ पे बनती थी सुराब साइकिल, अब आपको नजर भी नहीं। हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ गए, अब हम मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, हम आराम से बैठते हैं, हम फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, हम प्रोसेस फूड खाना पसंद करते हैं। तामिल्स में उनमें देखा गया ज्यादा लोग मर रहे, उनमें जब स्टडी की उनमें पता ये चला, उनमें ट्रंकल ओबेसिटी अगर आप उनकी देखें ना बढ़ती है, उनमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा है। डिस्पाइट इंटरेस्टिंग थिंग दैट फैक्ट इज दैट मैं 22 साल वेजिटेरियन, तामिल ज्यादातर वेजिटेरियन फिर भी मर रहे थे। गोश्त वालों पे क्यों जी आप गोश्त खाते जाते, उनकी रेस है। उन्होंने भी क्या किया, जंगलों से काम करके शहरों में आ गए। वो जंगल में काम करने वाले लोग,
सारा दिन जंगल में रहते थे, अमन आ गया, तामिल टाइगर्स खत्म हो गए, इसी में काट दी। ये सब दोनों फैक्टर देखो तो ऐसी है। अल्कोहल को अब प्रॉब्लम हमारी नेशन, जैसे सर ने कहा, मैं तो शुक्रगुजार हूँ सर आप काम कर रहे हैं, बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, अवेयरनेस कर। हमारी नेशन का प्रॉब्लम ये है कि सर हम PIC और MIC और बाकी जगहों पे कैथ लैब तो लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स तो मंगवा रहे हैं, हम प्रिवेंटिव पे काम नहीं, प्रिवेंटिव पे सिर्फ काम कर रहे हैं फैमिली फिजिशियन। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट मैं भी काम नहीं करता, हम प्रिवेंटिव की बात ही नहीं करते सोसाइटी में। हम जब तक प्रिवेंट नहीं करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट बनाने से कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी एस्पिरिन और स्टैटिन देते रहे, स्टंट डालने के लिए, इसको एक दफा स्टंट डल गया, मरते दम तक ये 2 दवाइयां वो नीचे। हमें प्रिवेंशन पे आना पड़ेगा। अब बात आती है ट्राइग्लिसराइड, सर किसी के भी ट्राइग्लिसराइड आ गया, हमें स्टार्ट करना। एक मिसकंसेप्ट ये है कि सर मेरा ट्राइग्लिसराइड 200 आ गया, उसको फाइब्राइड शुरू करा दी। नो सर, 500 से जिससे ज्यादा है उसमें फाइब्राइड, उससे पहले स्टडी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर ने बड़ा अच्छा बनाया केस, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले, मेडिसिन बाद। फाइबर टाइप पड़ा, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए हम फाइब्रेट्स देते हैं, उस पर भी अगर नहीं है हम कहते हैं आप कम खाएं। सर की बात दुरुस्त है, ट्राइग्लिसराइड नहीं है कि आप खुराक में लेते हैं, अगर खुराक में नहीं लेते तो सर ट्राइग्लिसराइड के लिए फास्टिंग लेते हैं, बाकियों के लिए तो हम फास्टिंग करवाते हैं, तो कहते हैं किसी और के लिए प्रोफाइल करवा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवाय ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चीज है जिसका कहते हैं 8 से 10 घंटे, तो मतलब आपकी खुराक का इफेक्ट पड़ता है। आप जो खा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड, जो भी खाना है सोच समझ के खाना है, फिर अपने हिसाब, या तो आप कसरत करें, लगाए चलें फिरें, फिर तो सिंपल सी बात। मेरे पास एक गुजरा वाला के पहलवान आते हैं सर, वो आजकल ये दुबा कढ़ाई बड़ी चलती है, ठीक है, तो मैं जब भी वो इलियास कढ़ाई वाले के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी ये आएंगे मेरे पास, कभी मेरे नहीं, मेरे किसी भाई के पास। सर ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आप अपनी डाइट रखें उस हिसाब से जो आपका जिस्म पचा सके। सर की बात से तो मतलब की माइटोकॉन्ड्रिया तो वही है जो वो पचा, अगर वो बचा ले तो आप। मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, मतलब एक और भी है कि हमें जो काम शुरू करना ना, पहले अपने घरों से करें, राइट। मैं अभी जस्ट एक मैंने सारे को पता होगा, डायबिटीज रिसर्च फोरम एक पार्ट है ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, जिसका एक हम डायबिटीज पे रिसर्च कर रहे हैं। एक स्टडी है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, और वो हम कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान के 1800 से 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनका हम A1C, लिपिड नहीं, A1C, फास्टिंग शुगर, बाकी प्लेटलेट सारा कुछ कर रहे हैं। वी स्टार्टेड दैट स्टडी। एक सेंटर अभी हमने 14 सेंटरों में करनी है ऑल ओवर पाकिस्तान, हर एक में से 150-150 स्टूडेंट्स। एक मेडिकल कॉलेज की एक दिन की स्टडी 125 दिन की बात है। इट वुड बी डिस्क्लोजिंग रिजल्ट अर्लियर, लेकिन जस्ट एक सैंपल है। वुड यू बिलीव कि उन 125 लोगों में 20 लोग प्री डायबिटिक निकले, एक फ्रैंकली डायबिटिक निकला। ये बच्चे हैं 18 साल से 25 साल के, हमारे बच्चे, मैं आपके मेरे बच्चे, ठीक है, जो 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने सिलेक्ट भी किया, और ये बड़ा सही ग्रुप बनता है कि उसमें डाइवर्सिटी भी है। कुछ हॉस्टलों वाले हैं, उनसे हम साथ ये भी पूछ रहे हैं कि फास्ट फूड कितना खाते हो, बैठते कितना, स्क्रीन पे कितना, मतलब वो सारा डाटा अपनी जगह, लेकिन रिजल्ट आर सो सरप्राइजिंग कि मतलब, और 2 फ्रैंक डायबिटिक, मेजॉरिटी जो है 6+, मतलब मेजॉरिटी 20 से 25 दिन का ज्यादा है, 125 में से 25। लुक एट दिस। तो अगर ये सूरत हाल है हमारे यहाँ के अपने बच्चों की, मतलब ये तो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पहले हमेशा ना अव्वल खबेश बात, हमें अपने घरों के कभी नहीं देखा, मुझे मेरे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं पहले उसको भी कभी देखने, मतलब रात को फूड मतलब आधा वक्त तो वो जो है ना कि खाने के बटन नीचे लिए हमने खा लिया, वो क्या खा लिया वो खा, तो ये और दूसरा वो इसकी बात हो रही थी, वो जो गाँव वाला जो है ना, गाँव में सबसे ज्यादा, मतलब मैं जो सम एक्सटेंट रहा है थोड़ा सा ताल्लुक गाँव में आने जाने से, वो जो 40-30 साल पहले का गाँव था ना, जिसमें बाबा जी रात को कंधे पे हल रख के तो खेत में जाते थे, और
पानी लगाने के लिए, आपको जो नहर के लिए पानी के लिए वो बटक होना था, वो कम से कम 3 किलोमीटर चला, सारी रात वो वहीं बैठता था। जो रात 2 बजे पानी की बारी आती थी तो मतलब वहाँ पे, और उसके बाद मतलब हल जो है वो उसके ऊपर बैठ के पीछे मतलब उसको आप कर रहे थे। अब सारा मैकेनाइज्ड हो गया है। अब सबसे ज्यादा जो लेजी है वो गांव वाला है। गांव वाला सुबह उठ के लस्सी पी के मक्खन खा के जाके दरख्त के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाता है। ट्रैक्टर चल रहा होता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, मोटरसाइकिल पे आता है, ठीक है। शाम को आके फिर वो लस्सी, दोपहर को भी उसको उसकी भर के खाना वहां पहुंच जाता, करता वो कुछ नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और सारा दिन आज का तो वो एक और काम है, उठा तो आज मोबाइल ही पकड़ा होता है। तो उसके नतीजे में अब इस वक्त जो इंसिडेंस है रूरल पॉपुलेशन में हमारे से अर्बन से कहीं ज्यादा, ठीक है। हमारे पास मैकडोनल्ड तो बात की बात है, आपका वहाँ का जो सबसे बड़ी बात ही यार, बात ही इनएक्टिविटी की है सबसे बड़ा। अप्रोचेबल के अलावा सर एक और चीज भी है कि आप एक बहुत मेजर एंटिटी को ना फूड में, प्रोसेस फूड के अलावा बेकरी आइटम्स, ब्रेड, बिस्किट्स, पिज्जा पैटीज, ये बेकरी आइटम्स अप्रोचेबल है एवरीवेयर। टी तब तक नहीं होगी जब तक लवाजमात हमने मैडम इनको लास्ट अभी पिछले मॉड्यूल में नोवा क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई थी कि हम प्रोसेस फूड को नोवा के बेस पे कैसे हम 4 कैटेगराइज करते हैं, तो हम इनको बता चुके हुए हैं। दूसरा, तारिक वसीम साहब ने जो बात की ना, अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। जो तारिक वसीम साहब रिसर्च कर रहे हैं ना, आप इसका खुरा नापें, ये प्रोसेस फूड से जाके मिलेगा, बिकॉज द स्टेपल डाइट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज बर्गर, पेप्सी, स्टिंग्स एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स. Now our children are getting the diseases of the adults once they were not even known. अब अगर 45% फैटी लिवर डिजीज अडल्ट्स में है तो 25% बच्चों में है. Everyone newly diagnosed type 2 diabetics out of 3 is a child. ठीक है. अब मसला चूंकि ये है कि ये सारा कुछ जाके प्रोसेस फूड के साथ ही इसका ताना बाना मिलेगा. आई थिंक हमने आज, अब जैसे जैसे हम कंक्लूडिंग की तरफ आ रहे हैं, हमारी बेस चूंकि बहुत अच्छी बनी हुई है. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर पैनलिस्ट, आवर वर्दी स्पीकर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर देयर एक्टिव डिस्कशन. इंतहाई शानदार मॉड्यूल आज का रहा, और मेरा ख्याल है कि जब हम अगला मॉड्यूल करेंगे तो फिर जब हम आपको वहाँ पर सर्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कमिंग फैमिलीकॉन, तो आपको उसका बहुत मजा आएगा. और आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक दैट यू हैव लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द पास्ट 4 to 5 months. All because of our worthy speakers, our panelists, and your enthusiasm and your dedication. Now, I would like to invite Dr. Tariq Mahmood for the vote of thanks and any update for the next coming FamilyCon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तारिक साहब का इंतहाई मशकूर है, ये हमारे हाथ चढ़ नहीं रहे थे काफ़ी अरसे से. लेकिन ये है कि आज इन्होंने कमाल कर दिया और एक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की प्रेजेंटेशन की इनकी. डॉक्टर नरेश कुमार का, डॉक्टर आयशा तारिक का, इनका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ, इन्होंने टाइम निकाला. मैं जस्ट एक वाक़या बताऊंगा कि एक दफ़ा जो पिछले सीएम थे उनके साथ एक मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब में बहुत ज़्यादा डायलिसिस यूनिट बना दिए. हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि हर वो चीज़ करते हैं जो कि जल्दी विजिबल है, जो है जहाँ पे प्रिवेंशन है उसके ऊपर काम इसलिए नहीं होता कि प्रिवेंशन का जाके कहीं 20-30 साल में जाके कोई असर आना भी है और वो किसी को नज़र भी नहीं आना, तो उस पर कोई काम नहीं होगा. तो मैंने उन्हें कहा जी कि अगर आप इसका 10वां हिस्सा भी स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन के ऊपर लगा दें और लोगों को जस्ट सस्ती सी दवाइयाँ अगर आप प्रोवाइड कर दें, आपको डायलिसिस सेंटर बनाने की इतनी ज़रूरत ही ना पड़े. तो इतने तो जितने मर्जी आप बनाते जाएंगे वो पूरे ही नहीं होंगे जब तक कि पीछे से जो खेती है वो उगती आ रही है. तो बहरहाल जी ये है कि कोई करे या ना करे, बीइंग नेचुरली वो आप जानते. तो मेरा ख्याल है कि बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशन, चूँकि हमें पता है और हमें दर्द है इस चीज़ का, दुनिया का कोई प्रोफेशन बता दें जो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी खुद मारता है. लोग कहते तो है ना, डॉक्टर डाकू बन गए, ये बन गए. कौन है जो प्रिवेंशन के ऊपर, प्रिवेंशन मीन्स कि आप अपने बिजनेस को रोक दें, लेकिन कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो ऐसा ना करता हो, लोगों को ना समझाता हो कि यार ये करोगे तो तुम्हारी खराबी है. तो मैं ये समझता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन आज भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं.
और आपसे गुजारिश ये है कि ये हमारा अब नेक्स्ट जो सैटरडे को लास्ट होगा मॉड्यूल, उसके बाद एक हमने डायबिटीज 28 को डायबिटीज का पूरा सेशन होगा पीसी में फैमिलीकॉन में, और उसमें एक हमने सेशन रखा है मीट दी एक्सपर्ट्स। उसमें आप डायबिटीज को ओपन आपके पास होगा A to Z, जो मर्जी आप क्वेश्चन करना चाहें, और उसी दिन इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कल संडे को शाम 6:30-7 बजे आप तमाम लोग इनवाइटेड हैं। हमारी लॉन्चिंग सेरेमनी है पीसी में फैमिलीकॉन की। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें ज़रूर तशरीफ लाइए। 27 से हमारी शुरू हो रही है फैमिलीकॉन। उसमें फर्स्ट डे पे रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड है, सेकंड डे पे डायबिटीज़ और गायनी की है, और थर्ड डे पे हमारी 3 वर्कशॉप्स हैं, फिर फोर्थ डे पे और PSIM के साथ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एकेडमी ऑफ फैमिली और PSIM ये जब से मतलब पैदाइश से लेके अब तक हमारा एहसास आपके लेकिन ये है कि ये इतनी तेजी से बढ़े कि बड़ी जल्दी जवान हो गए। तो इंशाल्लाह इनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन भी है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और गेट्स कंपनी का मैं समझता हूँ कि बगैर फार्मास्यूटिकल के सपोर्ट के हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो मैं गेट्स का भी इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने इसका, और इंशाल्लाह आपकी सर्टिफिकेशन होगी। मैं फिर डॉक्टर तारिक वसीम साहब का और डॉक्टर नरेश कुमार और डॉक्टर आयशा तारिक और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब एक ग्रुप फोटो के लिए तशरीफ लें ताकि ये हमारी यादगार रहे। थैंक यू सो मच।